Angel. Angel is not there. Pia Mehra, can you hear me? Divij, can you hear me? Yes, sir. What is the formula for multiplier? So 1 1 by upon MPS. 1 upon MPS. MPS. Okay. दूसरा formula आर्यन मलिक. Aryan Malik. Saloni, what's the second formula? 1 upon 1 minus MPC. Sara Chawla, what's the third formula? Sara Chawla. क्या बात है, किसी को आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? Divij, am I audible? Trisha Bajaj, what's the next formula? So the next formula would be change in income upon change in investment. So delta y upon delta I. So any of these formulas can be used to calculate the value of multiplier. Multiplier. To calculate the value of multiplier. Okay. So we'll start with few questions. Just give me a moment. Let's say we start with a question. Question number 88. We'll start reverse today. Question 88 says, the saving increases by 20 crore when the national income increases by 100 crores. So this is delta S and I want everyone to answer. This is delta S and delta Y. Delta Y. With the help of this, you can get MPS. The formula for MPS is delta Y delta S upon delta Y. So we got 0.2. The moment we got 0.2, we know one of the formula for multiplier is 1 upon MPS. So 1 upon 0.2. Now compute the additional investment needed to attain an increase in national income by, to increase the national income by 6,000 crores. So my delta Y is 6,000. Delta I is what I have to calculate. My multiplier came out to 5. And one of the formula of multiplier is delta Y by delta I. How much is the multiplier? 5. Delta Y 6,000. So with the help of this, we will get delta I as 1200 to begin with a simple question, which is delta, 5. So my answer comes out to 1200. So delta I is 1200. Any doubt? No, sir. All right. Sara Chawla. Yes, sir. Now let's talk about dictated question. सर उस क्वेश्चन में चेंज इन इनकम 6000 दिया हुआ था. Yes, mera beta. If I was little fast, I'll just take you back. See, it was written to attain an increase in national income by 6,000 crore. So it was given in the question. Okay, sir. All Yes, right. yes. Now next question सारा बात करते हैं फटाफट से. Question says find out the change in investment needed to attain full employment level of income. So we have to calculate delta I. We have to calculate dictated question delta I to attain full employment level. To attain full employment level. Now, suppose the economy is working at an income level of 8,000 crore, whereas the full employment equilibrium is attained at 10,000 crore. I repeat, we are working at 8,000 and we have to reach 10,000 because we have to calculate additional investment to attain full employment equilibrium. To attain full employment equilibrium.
So this 2000, ये जो 10,000 minus 8,000 difference है, this is what? Yes, Sarah. Sir, change in income. Change in income. And this is the change in income which is to attain Full full employment employment level. level, Yes, which sir. is 2000 crores. All right. Then it says for every rupees 100 earned, rupees 80, or I can write it as for every additional rupees 100 earned. It's one and the same thing. For every additional rupees 100 earned in the economy, rupees 80 is spent on consumption. Rupees 80 is spent on consumption. So what is this 80 over here, Sarah? Sir, then MPC will be 0.8. So she's trying to say the delta C is given to us as C Yeah. and delta Y is given to us as 100. Yani my delta C upon delta Y is 0.8. Now one of the formula of multiplier is 1 upon 1 minus MPC. So 1 upon 1 minus 0.8 gives me 5 again. Again, one of the formula to calculate multiplier is delta Y upon delta I. And my delta Y in this question is 2000. So my delta I will become 400 crores. 400. So this is again one of the question where we got MPC with the English interpretation that for every rupees 100 earned, we are spending rupees 80 on consumption. Indirect way of saying delta C. Now these are the mixed bunch. The saving function of an economy is given as minus 250 plus 0.255. Saloni, what is this minus 250? Saloni, Trisha, So Trisha, this what? minus or a minus C bar. Minus C bar means indirect way of saying C bar is 250. 250. Angel, Yes, sir. what is this 0.25? MPS. Because S के फॉर्मूला में MPS होता है और C के फॉर्मूला में MPC होता है. So this 0.25 is nothing but the value of MPS, which is 1 minus B. Now question says, if ex ante investments, if planned investment is 2000 crores, if planned investment is 2000 crores, first requirement is find out the equilibrium level of income. Find out the equilibrium level of income. Now Aryan Malik, Divij, Yes, sir. इक्विलिब्रियम लेवल का कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? Sir, where savings is 0. नो बेटा, आप गलत हो गए ना यहाँ पे. बेटा सेविंग 0 कब लेते हैं? जब ब्रेक इवन पॉइंट होता है पुत्र. सेविंग 0 कब लेते हैं? जब ब्रेक इवन पॉइंट होता है. वो आपको क्या निकालने को कह रहा है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. वो आपको क्या निकालने को कह रहा है मेरा बेटा? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. एंड आपको पता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं. वन इज एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स एग्रीगेट demand. Aggregate supply and national income is one and the Same thing. so can I write aggregate supply की जगह पे y Yes, sir. and the formula for aggregate demand component is C plus C.
आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन ट्वाइस, जिसको पेपर में जैसे अच्छा लगे कर लेगा. सो अगर आपको स्ट्राइक करता है दैट वी नो दैट y इज इक्वल टू c प्लस आई, यूज दिस इक्वेशन. y इक्वल्स c की जगह c का फॉर्मूला लिख दें, c बार प्लस by प्लस i, c bar plus by plus I. Now in this question, how much is c bar? 250. How much is b? Sir, 1. David, can you hear me? Yes, sir. And we know MPC plus MPS is always equal to 1. सर आपका Sir, screen you're not share है. presenting. क्या कह रहे पुत्र? Sir, आप screen present नहीं कर रहे हो. अच्छा सॉरी, वो भी नेट डिस्कनेक्ट हुआ था, मे बी बिकॉज ऑफ दैट. इज इट अभी दिख रहा है बेटा? अभी दिख रहा है बेटा? ओके. नाउ एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1. एमपीएस कितना था बच्चों? 0.25. सो एमपीसी विल बी इक्वल टू, yes David, MPC will be equal to 0.75. Is that clear? David, Yes, sir. is that clear beta? सर आपकी voice अभी आ रहा है बेटा वॉइस? yes, sir. Am I audible now? Yes, sir. Now I given to me is 2000 crores. Right, sir. Y minus 0.75y will be equal to 2250. 0.25y will be equal to 2250 and y will be equal to 2250 upon 25 into 100. So equilibrium level of income comes out to 9,000 crores. Equilibrium level of income comes out to 9,000 crores. Is that clear, Divij? Yes, sir. Now I will do. सारा कहती है सर मुझे ये स्ट्राइक नहीं करता है. सारा कहती है I want to use equilibrium level of income comes. Yes बेटा. सर इसको हम सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के अप्रोच से कर सकते हैं. मैं वही बता रहा हूँ बेटा. सेकंड अप्रोच जिसको जो स्ट्राइक कर जाए इस केस में, we know that saving is equal to investment. We also know that saving is equal to investment, and saving is minus 250 plus 0.25y, and the value of I is 2000 plus 250. So this is 2250 0.25y. So y equals 2250 upon 0.25. Again, when you solve it, the value becomes 9,000 crores. The value becomes 9,000 crores. So my first part is done. Whether you do it with AD is equal to AS or you do it with saving equals investment. Then comes aggregate demand at an income of 5,000 crores. My turn. कहता है your income is 5,000 and find out aggregate demand. Sarah, how to do it? सर इक्विलिब्रियम लेवल वाला ही बताना है. नहीं बच्चों, इक्विलिब्रियम तो हो गया. अब वो सेकंड पार्ट अच्छा. पूछ रहा है, फाइंड आउट द एग्रीगेट डिमांड एट एन इनकम लेवल ऑफ 5,000 करोड़. बोलो बेटा. सारा, कैन आई हेल्प यू? यस सर, सर मुझे अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा है. कोई बात नहीं बेटा. एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या होते हैं बच्चों? आप plus हमेशा बस एक ही चीज याद रखना, वो पूछ क्या रहा है और उससे रिलेटेड आपको क्या आता है. हमें पता है एग्रीगेट डिमांड इज C plus I. Yes sir. I repeat, aggregate demand is C plus I. Now C is C bar plus BY plus I. B.
हमारा सी Yes, बार sir. अभी हमने देखा था कितना था 250, Yes, sir. हमने एमपीसी अभी निकाल लिया था 0.75 Yes, sir. और Into वाई 5,000. यस बिकॉज उसने बोला एट एन इनकम लेवल ऑफ 5000 करोड़ एंड इन्वेस्टमेंट इज 2000 गिवन टू अस इन द 2,000. क्वेश्चन। Yes, sir. तो ये कितना आ गया बच्चों 3750 Yes, sir. प्लस 2000। So my answer comes out to 3750 5750 6000। बुक का आंसर गलत है, देखो मैंने पहले भी कट किया हुआ है। So the answer for this question is 6000 crores। The answer for this question is 6000 crores। सारा, सलोनी, त्रिशा, आर्यन मलिक, जरा ध्यान देना बच्चों, ये तो बहुत लंबा तरीका था आपको समझाने का। कैन आई से हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना है, छोड़ो वो वाला शॉर्टकट, कंफ्यूज हो जाओगे। इज दैट क्लियर? दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट जिसमें सारे केसेस हो जाएंगे। दिविज ये क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, नाउ कम्स come to question number 84। I'm just doing repetitive की जगह individual questions जो मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स कवर कर ले। क्वेश्चन कहता है चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई 5000 करोड़, एमपीएस इज 0.25, एमपीएस इज 0.2। सो मल्टीप्लायर अगर मुझे निकालना है, वन ऑफ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मल्टीप्लायर इज 1 अपॉन एमपीएस। तो मेरा फर्स्ट पार्ट तो हो भी गया टुच्चा सा। सेकंड पार्ट कहता है फाइंड आउट चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम के का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई विच इज 5। डेल्टा वाई आई डू नॉट नो एंड डेल्टा आई is given to us as 500 crores। So my delta y becomes 2500 crores। The previous question जो किए थे उसमें डेल्टा y दिया हुआ था, डेल्टा i निकालना था, अब डेल्टा i दिया है तो डेल्टा y निकालना है। एंजल ये बात क्लियर है? हाँ जी सर। Question 83। Question 83 says, is the economy in equilibrium at an income level of 1500 crores? If my income is 1500 crore and if the economy is in equilibrium, aggregate demand and aggregate supply must be, बोलो बच्चा पार्टी, equal। Equal. Aggregate supply and national income is one and the same thing। ये हमने थियरी में पढ़ा था लास्ट क्लास में। एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम इज वन एंड द सेम थिंग। अब मुझे सिर्फ क्या निकालना है, एग्रीगेट डिमांड। व्हाट आर द कंपोनेंट्स सारा फॉर एग्रीगेट डिमांड? P plus I. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सी? C bar plus BY plus investment. मैंने ये लिख के छोड़ दिया अभी। अब आगे पढ़ा क्वेश्चन। The consumption function of an economy is 200 plus 0.55। 200 plus 0.55। Investment expenditure is 400 crores and we have to assume income as 1500 crore because they say is the economy at an equilibrium level of 1500 crores। If the economy is at equilibrium level at an income level of 1500 crore तो 1500 करोड़ पे मेरा एग्रीगेट डिमांड भी कितना आना चाहिए, बोलो बच्चा पार्टी? 1500. So let's check that। So the economy
is in equilibrium or not in equilibrium? Not in equilibrium. Not in equilibrium. Because at an equilibrium level, aggregate demand has to be equal to aggregate supply. Whereas in our case, my aggregate demand is coming to be 1350 crores. Is that clear, Bacha Bati? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pia Mehra. Yes. Now let's talk about 78th question. I have to do 3 to 4 more questions. Now question 78 says, बाकी आप जितने मर्जी प्रैक्टिस कर लेना और बच्चों मुझसे डाउट पूछ लेना. मैं शाम का भी एक टाइम रख दूंगा थोड़ा लेट का, बिकॉज आई विल गेट फ्री लेट. अभी भी मैं थोड़ा लेट हो गया, तो आप लोगों को डाउट्स होंगे तो आप मुझे ग्रुप पे लिख देना. मैं शाम को भी एक जूम क्लास रख लूंगा और एक कल भी रख लूंगा. An economy is in equilibrium. We are already at equilibrium. That is what they are trying to say. And they say calculate the investment expenditure one by one. MPC 0.9 मैंने लिख दिया. Autonomous consumption 200 crores. मेरे को थोड़ी देर बाद चाय दे देना बस, नींबू वाली चाय. ठीक है, थैंक यू. लेवल ऑफ इनकम 10,000 crores. बताओ क्या करूं पिया मेरा? So with the information and the question, we can calculate since the economy is in equilibrium, we can say that AD is equal to AS. And She's saying that in this question, my aggregate supply is 10,000. She's saying my economy is in equilibrium, as the question says. It means my aggregate supply is 10,000. Aggregate supply is equal to aggregate Demand. Aggregate supply is 10,000 should be equal to C plus I. Aggregate demand is equal to C plus I. मैंने सिर्फ values replace कर दिया और C की जगह पे एंजल वोरा क्या लिख दूं बेटा? C bar plus B bar. Plus I. My C bar is 200. My MPC is 0.9y plus I. एंजल वोरा आपकी बारी. अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या लिखूं बेटा? Y की value is given. Thank you. 10,000, because that is the economy equilibrium level of income. So 10,000 minus 200 minus 9,000 will be equal to I, which comes out to 800 crores. Which comes out to 800 crores. Is that clear, everyone? सलोनी, ये बात क्लियर है बेटा? Yes, sir. क्वेश्चन 76 मुझे सलोनी कराएगी फटाफट से. और उसके बाद आर्यन मलिक जवाब नहीं दे रहा है. अगर आर्यन मलिक का मैं नाम लूंगा तो मुझे फोन करके व्हाट्सएप कॉल करना बच्चों, बिकॉज यहाँ पे सिग्नल नहीं आते हैं. वेयर आई एम राइट नाउ. ओके, क्वेश्चन 76 सलोनी क्या कहता है बेटा? 76 नंबर क्वेश्चन. You have to calculate autonomous consumption. All right. The moment you said we have to calculate autonomous consumption, मेरे दिमाग में क्या आया? To get this, I first need consumption. I first need consumption, and now I'll proceed further. Because consumption का फॉर्मूला होता है C bar plus BY. अगर मुझे consumption और BY मिल जाएगा तो मैं अपना autonomous consumption calculate कर सकता हूँ. All right, बेटा. Now question says income is 5,000 crores. MPS is 0.2. MPS is 0.2. तो बताओ MPS का क्या करूं बेटा? How
From MPS we can get MPC. Thank you. So if MPS is 0.2, so my MPC will be, 2.8. because MPC plus MPS equals 1. And now the investment expenditure is given to me as 800. अब बता बेटा क्या करेगा? इसमें we can do YC plus I. एक मिनट रुक जाओ बेटा. She says sir Y is equal to C plus I. मतलब लड़की बोल रही है aggregate supply equals aggregate demand. Y is 5,000. Y is 5,000. C bar plus BY plus I. C bar is नहीं पता. B is 0.8. Y is 5,000. And how much is I? 800. 800. Solve it and get it. Finish. Important नहीं है. You just have to recall. आप देखो बार बार आप दो ही चीजों के आसपास घूम रहे हो. Either S is equal to I or aggregate supply called Y is equal to C plus I. Aryan Malik. आर्यन मलिक कॉल करो मुझे. आप एक बार जो अभी क्वेश्चन किया एक बार वो वापस से दिखा सकते हो? अभी दिखाता हूँ मुझे. दिव्य एक बार क्वेश्चन नंबर लिख ले बेटा. 54. Yes, sir. फिफ्टी लिख ले. आप लोग कर लोगे बच्चों बाद में. वो मैं भी क्लास में नहीं कराऊंगा बट आप लोग सॉल्व कर लोगे. वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा बच्चों. मैं लिख के कर दूंगा. ओके. आर्यन मलिक कहाँ गया भाई? फोन कर ले बेटा. चलो त्रिशा बजाज करा देगी. त्रिशा बजाज. मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ बेटा. ये लो त्रिशा. ठीक है सर, हो गया. You wanted to click the picture? No sir, I just had to confirm कि आंसर मेरा ठीक आया या नहीं, because I didn't see you doing it. Okay. Question 54. त्रिशा की बारी. क्वेश्चन कहता है इन क्वेश्चन 54 for calculate MPC. हाँ जी. Consumption expenditure at zero income level. Consumption expenditure at zero income level. I वो repeat. autonomous consumption हो गया. Consumption expenditure at zero income is 70. So 70. she is saying 70. उसके बाद है equilibrium income 700 यानी Y 700 and investment 140. Now question is over. Tell me how you will calculate MPC. 700. हमें C bar दिया हुआ है, so we need, okay, so we can do it by Y equals C plus I. We'll get that it will be 700 equals to C plus 140. C को expand करके 700 plus C bar plus BY plus 140 and That's उसको it. solve बस खत्म. हमें यहाँ पे क्या निकालना था बच्चों? MPC. And MPC is nothing but B. So by writing this equation, जो मैं आपको बार बार कह रहा था, you have to revolve around the equation only. You just have to see which one is missing and get that value. So 700 minus 70 minus 140 equals
B into Y, which is 700B. So this is 560. Sorry, 200 gaya 500, 490. 490 upon 700 equals B, which comes out to 0.7. So your MPC is 0.7. हाँ जी. Okay. Sarah, not Sarah, David, Sarah, everyone. अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, जस्ट रेज योर हैंड. सबका जी, कैमरा मैंने ऑफ है किया इस समय. था। हाँ बेटा, क्या कह यस रहे सर, हो मैं कह रही थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने किया था वो y इज इक्वल टू c प्लस आई वाले उससे, हाँ जी, उसमें हम सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट लेके भी कर सकते हैं ना, क्योंकि बिल्कुल उससे बच्चों. फिर देखो कंजम्पशन 4200 मैंने शुरू से बताया कि आप किसी से भी निकाल सकते हो, जस्ट दैट आपको कौन सा स्ट्राइक करता है. बेसिकली ठीक है y इज इक्वल टू c प्लस आई इज वन इक्वेशन जिससे आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. वो क्या कहते हैं ना बच्चों, वन मेडिसिन फॉर अच्छा ऑल. ओके सर तो उसमें मुझे बार बार सोचना नहीं पड़ता डिफरेंट सिचुएशंस के लिए. अदरवाइज दोनों फॉर्मूलाज हैं, आप जब जिस फॉर्मूला से कंफर्टेबल हो सॉल्व करने में, आप उससे उसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है सर ओके, नाउ लिखते हैं बच्चों. एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे, सो आई ट्राई टू डिक्टेट. द ऑटोनमस not autonomous sorry autonomous the autonomous consumption and investment expenditure. थोड़ी राइटिंग गंदी आ रही है बच्चा पार्टी आज. The autonomous consumption and investment expenditure at an income level of 4,000 crores is 50 crores. The slope of consumption is consumption curve is 0.8. The slope of consumption curve is 0.8. Is the economy at equilibrium? गाइस हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चन आज नहीं कर पाऊं, सो मैंने जो टेस्ट सीरीज अभी कंडक्ट की थी उसके पांचों पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको एक बारी जरूर सॉल्व कर लेना. जिसको जो डाउट हो मुझसे पूछ लेना. इज द इकोनॉमी एट इक्विलिब्रियम? हु वांट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी? जस्ट रेज योर हैंड, हरी अप क्विक. आप लोगों का कैमरा ऑफ है आज सबका बेटा. पिया मेरा रेज द हैंड, नोबडी एल्स. Pia Mehra, can you solve it for me? Yes, sir. So All right. AD, we'll use AD is equal to C plus I. We will use y is equal to c plus I. That is what you are saying? Yes, sir. Okay. And Then what? we'll write down R plus B1. And then C bar and I together is autonomous consumption and investment expenditure, which is 50 crore. Thank you very much. That was the catch. And they together are called मेरा बेटा. A bar. ये बात याद रखना. The Yes. sum total of C bar plus autonomous investment is also given as A bar अगर पेपर में वो गलती से लिख के देते हैं. This was the only catch of this question. So can we say, मैं लिख दिया यहाँ पे AD, मैंने अभी पिया की बात मान ली. C bar plus I is 50 crore. B is 0.8. This is called English का maths. वो कहता है the slope of consumption curve is 80 crores. The slope of consumption curve is 80 crore and MPC represents the slope of consumption function. So B into Y, which is 4,000. So my answer comes out to 3250 crores, whereas the income level is 4,000 crore. It means again
The economy is not at equilibrium. The economy is not at equilibrium. Is that correct, Sara, Saloni? Yes, sir. Correct. Yes, sir. All right. चलते हैं आगे बच्चों, भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक एक. I think now I'm done with the questions. बस एक चीज और पूछनी है मुझे, वो पूछनी है मुझे दिविज से. दिविज, Yes, sir. the consumption curve of the economy represented by a positive slope intersects positive of y-axis at 80 crores. My question is, what is 80 crores in this question? Autonomous consumption. थैंक यू वेरी मच. बस ये छोटी छोटी बात याद रखना, ये मैंने पहले भी क्लास में कराई थी. अगर वो कहता है सेविंग कर्व स्लोप करता है और इंटरसेप्ट किस पे करेगा, वो पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस या नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस? Negative of y-axis. And then also it will become autonomous consumption represented by negative savings. So all about multiplier numericals.